Okay, wait a minute. Okay. So, hello everyone, I'm Sudipta Simran Ponda, welcoming you all to Vedang classes powered by Vedang Institute of Technology. So, tell me, how are you everyone? केमिति सबु अच्छा तमानका प्रिपरेशन केमिति जाइछि एंड मेन इंपोर्टेंट थिंग आजिर आरआई एग्जामिनेशन को मानकर थिला एंड केमिति हेछि कोंदो हां मु तो एकदम बढ़िया बहुत भलो अछि थैंक यू फॉर आस्किंग मु बहुत बहुत ही भलो अछि हां होप यू आर डूइंग वेल अल्ट्रन अल्ट्रन मु जानछि तमे किए हैला आउ एता ए स्टाइल मारनी हां ओके डॉक्टर थैंक यू फॉर आस्किंग मु भी बहुत भलो अछि होप त माने भी बहुत भलो थिबो ओके तो स्टार्ट करिबा आजरा क्वेश्चंस ऑलरेडी मु 3-4 मिनिट लेट रे जॉइन करछि सो टाइम वेस्ट करिबानी तो फर्स्ट थिंग आपण माने देखि नियंतु आपणकर इंपोर्टेंट थिंग होउची कि द स्पंदन बैच जोटा कि आपण माने सीजीएल प्री क्वालिफाई करिसंती सीजीएल मेंस जो माने दोउचंती दिस इज द बैच जोटा कि आपण मानकु दरकार स्पंदन सीजीएल मेंस बैच एंड एठी आपण मानकु थ्योरी आ पढा होनी जोटा श्योर शॉर्ट जोटा कि आसीबो एग्जाम रे को टाइप रो क्वेश्चन आंसर सेगुडा को आपण पूरा मने रखा होची ओके तो एठी आपण माने मो कोड SPG10 यूज करि परिबे टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ओके आउट ऑफ दैट सहकारी बैच आपण माने 1199 भी परचेज करि परिबे एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जोटा कि अपकमिंग आपनकर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आसुची सेक्रेटेरिएट रो तो तार बैच हमर ना रखाई छि अनुशासन बैच एंड मने रखंतु जदि आपण माने अनुशासन बैच रे जॉइन करूछंती एंड आपण माने 100% सिलेक्ट होचंती ताहाले आपण माने फ्रीली माने जोटा भी पैसा देइथिबे से सब आपन को वापस मिलिबो ता सहित गिफ्ट हैम्पर्स भी अछि ता सहित फैसिलिटेटेड प्रोग्राम भी अछि एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ओके एंड एठी भी एटा किंतु प्राइस किछि माने ड्रॉप नाही किछि आपन माने डिस्काउंट पाई परिबेनी एटा आपन को रॉ प्राइस बिकॉज़ बहुत सारा जिंस हम आपन को एथरे देबा को जाउछु दैट्स व्हाई एंड पेड क्लास रे कोन आपन को तार स्ट्रक्चर केमति कोन प्रोवाइड करा जिवो जस्ट हैव ए लुक हियर जेमिति कि 200 प्लस आपन को क्लासेस रहिबो माने आवर्स क्लासेस रहिबो 3000 plus is MCQs provide करा जिवो and टेस्ट सीरीज तार पुनी लाइव डिस्कशन आपन को प्रोवाइड करा जिवो and जोटा कि आपन मन को 3000 MCQs रहउची तार आपन को क्लास एंड प्रिंटेबल फॉर्मेट रे पीडीएफ भी प्रोवाइड करा जिवो दैट इज अ वेरी वेरी ह्यूज थिंग एंड इंपोर्टेंटली फास्ट क्वेश्चन आजि रो कोन अछि देखि छिबा चलो जानि चंदी मैम गिव्स दैट सीक्रेट ओके एसो पाइले गोवा ट्रिप हाँ ट्रन तमे जदी गो एसो पाइबो डेफिनेटली मु सेटा को स्पॉन्सर करबी तमे गोवा छी हैला यस आसा तो फर्स्ट क्वेश्चन आपण मानक सामने रे मते कहंतु कोन क्वेश्चन अछि देखंतु कहि इन व्हिच ऑफ हिज रॉक edicts Dutch Emperor Ashoka explicitly mentions the devastation of the Kalinga War and express his deep remorse. कौन हबो राइट आंसर मते के कहि परिबो व्हाट विल बी द राइट आंसर क्विक कम ऑन 13 पक्का श्योर 13 को आपण माने राइट आंसर चूज करूछंदी मु कोन ह करबी तो मेजर रॉक एडिक्ट यार एक्सप्लेनेशन आपण को पई आज किछि नियारा तरीका रे मान지 सेति पई एक्चुअली टिके लेट हे गला यार एक्सप्लेनेशन रेडी कला बेले जदि आपण माने देखिबे मेजर रॉक एडिक्ट जोटा कि आपणकर एक्स रहउची व्हाट इज द एक्स डिनोट फॉर आपण माने मने रखंतु दिस इज इंडिविजुअल ग्लोरी एंड डिजायर विषय आपणकर वर्णना करा जायछि जोथि आपणकर असर्टिंग करा जायछि द ट्रू एंड ग्रेटनेस कम फ्रॉम द कोन ना आपणकर धामरु कोन सब आछि किंतु राइट आंसर तो आपणकर 13 आसंतु देखंतु एक्चुअली आंसर को टाइप रो प्रोवाइड हिच हैव ए लुक हियर so your right answer आपणकर होची 13 ता सहित मन रखंतु अशोकस रॉक एडिक्ट कोठी मेंशन करा जायछि आग तो फर्स्ट आपणको राइट आंसर दे दिए next देखंतु so the sorrow that was caused when Kalinga was conquered 150,000 everything आपनको मेंशन करा जायछि about major rock edict 13 ने कोन मेंशन करा जायछि just have a look here ना Ashoka explicitly mentions the devastation of the Kalinga war here and he expresses deep sorrow and remorse for the loss of the lives जोड़ा कि आपनकर 1.5 लाख लोक या फिर ताठु अधिक आपनकर डेथ हेतिला and this event transport him from a conquer कोथरो ना चंडाशोक रो धर्माशोक रे कन्वर्ट हेई जाइथिले ओके
After that marks the beginning of his policy based on the non violence compassion and welfare उपरे से focus करिथिले. Okay, yes yes समस्त को very very good evening. आसो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन कहूची ना द सतवाहन किंग गौतमी पुत्र सतकर्णी हन नै इज डिस्क्राइब्ड एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ द क्षत्रियस इन व्हिच फेमस इंस्क्रिप्शन कोन कहचंदी ना डिस्क्राइब करसंदी एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ द क्षत्रियस बोली कहां को ना सतकर्णी को एटा आपनकर को जगह रे मेंशन करा जाईची मते के कहि परिबो जदि हमें कहिबा व्हाट इज अबाउट द जौगड इंस्क्रिप्शन एटा हमर कोठी अछि ना ओडिसा रे अछि सॉरी जौगड़ नहीं जूनागढ़ लिखा है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कहले आपण मानकर मन रखंतु एटा आपनकर को कहा विषय रे लिखा जाईची ना द साक रूलर रुद्र के ना रुद्र दमन 1 का विषय रे आपनकर ए इंस्क्रिप्शन रे मेंशन करा जाईची इट्स अबाउट रुद्र दमन 1 एंड मन रखंतु याकु जदि हमें कहिबा सुदर्शन लेक पाखरे आपनकर अंडर द सुदर्शन लेक आपनकर एटा मेंशन करा जाईची आ जदि नासिक यार राइट आंसर कोन देखु फर्स्ट राइट आंसर कोन हबो मते कहि दियंतु तापर हमें जीवा राइट आंसर नासिक हबो श्री समन्विता प्रणाम वेरी गुड इवनिंग यस डी कहूची मैम श्री डी कहूनी श्री कहूची नासिक दैट मींस बी कहूची एंड सी इज राइट तो राइट आंसर आपनकर कोन होची ना नासिक प्रशस्ति रे आपनकर ए जिंसटा को एलाबोरेट करा जायची द नासिक प्रशस्ति रिकॉर्ड द ग्लोरियस अचीवमेंट्स ऑफ द सतवाहन किंग गौतमी पुत्र सतकर्णी का विषय रे एंड कोन मेंशन करा जायची ना फाउंड इन द कोडी ना पांडवल्नी केव्स नासिक महाराष्ट्र रे आपनकर ये प्रेजेंट अछि रिटन इन द को लैंग्वेज ना प्राकृत लैंग्वेज रे ब्राह्मी स्क्रिप्ट ये मध्ये लिखा अछि कंपोज केबे हितला 5th सेंचुरी कॉमन एरा रे कंपोज हेतिला एंड कंपोज कहा द्वारा हिची ना गौतमी बालश्री द्वारा कंपोज करा जायछि द मदर ऑफ द गौतमी पुत्र सतकर्णीकर एतिकी जिंस आपण माने मने रखिबे क्लियर बाकी आपनकर अबाउट गौतमी पुत्र आपनकर किए थिले तांकर हाइलाइट्स तांकर पॉइंट सब मेंशन करा जायछि नेक्स्ट चलो मते को ड्यूरिंग द सिविल रेविलियन फेज ऑफ द पाइका विद्रोह 1817 व्हिच प्रोमिनेंट लोकल लीडर from the Bonapur mobilized the Kondho and Sabara tribes to support the Bokshi Jagabandhu jete bele 1817 मसिया कथा आसुची कंट्रोल प्लस सी ओके सी जते बेले आपन को क्वेश्चंस आसुची अबाउट द 1817 रिवोल्ट और आपन को कहूची पाइका विद्रोह विषय रे देन यू नो टू रिलेट विथ द बक्सी जगबंधु ऑल वी नो बट क्वेश्चन आपन को पछाची बक्सी जगबंधु को आपनकर सपोर्ट किए करिथिले मते कोंतु मे बी आपन माने बहुत रेयर आंसर यार जानिथिबे देखिबा केतन आंसर दउचंदी समस्त आंसर ठीक ठाक बाडे देलनी समस्त आंसर ठीक ठाक पूरा पिटिलनी कोन कथा पढिचो सबु अरे वाह ग्रेट सो राइट आंसर आपनकर किए हेबे ना कृतिबास पोत्सानी किए थिले ये कृतिबास पोत्सानी जस्ट हैव ए लुक ना the local leader from Bonapur who mobilized the Kondha and Sabara tribes to support the Boxi Jagabandhu during the civil rebellion phase of Paika Bidroha thile amara kiye Krutibas Potsani 1817 मसिया रे and he was a prominent leader from the Bonapur region एतिकी मन रखंतु played a vital role in the civil rebellion against the British in the during the year of 1817 ताकु मन रखंतु extended strong support to the Boxi Jagabandhu against the British देन देलो एंड इंपोर्टेंट फैक्ट आपण मन जानि सदी पाइका विद्रोह को हमर 1817 को कोन डिक्लेयर करा जाय द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन ओडिसा जदि क्वेश्चन पचारिबो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया ताहले नै डिक्लेयर ओडिसा गवर्नमेंट तांकर मने मने कर दैचंदी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन ओडिसा बोली कागो 1917 को किंतु इंडिया गवर्नमेंट ताकू स्ट्रांगली अपोज करिछि कि कहिछि दिस इज द फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश नॉट अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस कारण लोक माने तले फाइट करूथले they were not fought against the independence they fought against the britishers तो एटा को britishers against डिक्लेयर करा जायछि but the 1857 सिपाही म्यूटिनी को आपनकर डिक्लेयर करा जायछि the first war against the independence keep it in mind okay next question कोन अछि देखो मते को the famous Nonka famine which severely decimated the population of coastal Odisha occurred during which regnal year of the Bhuyan dynasty king Divya Singh Dev मने रखंतु दिव्य सिंह देव आपनकर भोई डायनेस्टी बिलोंग करंती करेंटली आपनकर जे अछंती गजपति से भी दिव्य सिंह देव एंड से मध्य भोई डायनेस्टी बिलोंग करंती बट एबे क्वेश्चन आसुची आपनकर नॉन्क ऑफ फेमाइन पीरियड रे ओके द पीरियड वाज नॉन्क ऑफ फेमाइन तो सेते बेले तले आपन क्वेश्चन पचारिबो नॉन्क ऑफ फेमाइन कथा मने रखंतु 9th एक रे तो नॉन्क मींस आपनकर 9th रेगनल ईयर 9th शासन काल कहार ना दिव्य सिंह देव कर जस्ट हैव ए लुक हियर ना आपनकर नॉन्क ऑफ फेमाइन 1866 रे हेतिला नॉन्क ईयर 9th ईयर बोली तांको नॉन्क ऑफ फेमाइन करा जायछि किंग के थिले दिव्य सिंह देव थिले की पॉइंट्स ताकर जस्ट हैव ए लुक हियर भोई डायनेस्टी रूल्ड कोस्टल ओडिसा फ्रॉम द 16th to 19th
century. After that, Divya Singh Deo ruled from 1827 to 1866. Question apan ko asibo Divya Singh Deo 1866 re he was the responsible king during the year 1866. Then from which year he was sacked his kingdom. Then mane rakhantu 1827 to 1866 पर्यंत शासन करिथिले and the famine आपनकर 1866 year रे हेइतला जोटा कि 9th regnal of his ruling. Then it is remembered as the Nanka due to the extreme severely. ए जिनस मन रखिबे and आपनकर recovery phase के थिले British relief commission begin हेइतला आपनकर start हेइतला and the important point have been mentioned here. Next question jiba as amate ko at which session of the Utkal Sammilani did the organization formally adopt a resolution to merge its regional identity and national goals with the Indian National Congress. कौन हपर right answer टिके दियो right answer टिके दियो कौन हबो एते पिला अच्छा लाइक तो करो सडन कोन पिला एते आसीबो हो देखो आंसर दियो म देखो at which session कौन पचारुची आरआई एग्जाम रा एनालिसिस भाबी के आछे कि सब The Bengal famine was devastating for shortage 1943. That was the first famine, the Bengal famine. After that, 1866 is our second famine. Okay, the Great Famine. So, ଏବେ question ने पचारुची कोन ना at which session कथा पचारुची मते को the Utkal Sammilani आपनकर हेइथिला 1903 रे आपण माने समस्त जानि सन्दी कटक सेशन हेइथिला 1903 रे कटक सेशन हेइथिला and this is the foundation stone आपनकर हेइथिला उत्कल सम्मेलन रो. But the question is not asking about that. Question का पचारुची ना at which session of the Utkal Sammilani did the organization formally adopt a resolution to merge its regional identity and national goals with the Indian National Congress. Indian National Congress सहित आपनकर केबे merge हेइथिला quick जल्दी को अच्छा हो नेक्स्ट में देखो कौन हबा राइट आंसर 1920 वाला सेशन 1920 वाला सेशन को ताहाले हमें लॉक कर देबा कौन कहछि ना उत्कल सम्मेलनी 1920 चक्रधरपुर सेशन रे हेतिला at which session of the उत्कल सम्मेलनी क्वेश्चन पचारछि राइट आंसर आपन का 1920 एंड माने रखंतु इंपोर्टेंट कौन थिला ना फर्स्ट थिंग 1903 मसिया रे मेंशन करछि कटक सेशन जोटा कि आपनकर की हाइलाइट डिस्कस हेतिला एजुकेशन विषय रे रिप्रेजेंटेशन की करथिले ना आपनकर प्रिपेयर हेतिला प्रोविंस डिमांड एउडा सब आपन को मन रखा को पड़िबो सेकंड आपनकर 1914 रे देन 1920 रे आपनकर चक्रधरपुर सेशन हेतिला चक्रधरपुर जोथिरे आपनकर इंडियन नेशनल कांग्रेस सहित मर्ज हेतिला उत्कल सम्मेलन एति जिंस आपन माने मन रखिबे 1923 आपनकर बरहमपुर सेशन टोटल 4टा सेशन कटक सेशन पालाखिमुडी सेशन चक्रधरपुर सेशन देन बरहमपुर सेशन दिन 4टा जाक आपन को इंपोर्टेंट मने रखिबे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलो मते को हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डायनामिक एडिटर हु वाज द फॉलोइंग वाज द डायनामिक एडिटर जल्दी आंसर दियो British rule in India began after the Battle of Plassey in 1757 क्वेश्चन कोन पचाछि लुका तमे कोन आंसर दोउछ क्वेश्चन कोन अछि जल्दी दियो आंसर दियो मते कुओ who among the following was the dynamic editor of the nationalist journal Sambalpur Hitaseni which strongly advocated for Odia linguistic unification for Western Odisha what will be the right answer quickly answer दियो जल्दी आंसर टिके जल्दी जल्दी दियो 50 टा क्वेश्चन अछि सो जल्दी जल्दी आंसर दियो गौरी शंकर रॉय पक्का डन ओके आसा देखो कौन हबा राइट आंसर ना नीलमणि विद्यारत्न एठी आपन को क्वेश्चन पचाछि किए ना वाज डायनामिक एडिटर जदी फाउंडर आपन को पचारि थांता जदी आपन को फाउंडर पचारि थांता ताहाले सिना गौरी शंकर रॉय पचारि थांत कहि थांतो जदी एडिटर पचाछि बार बार मो तो पाई को कहि छि एडिटर क्वेश्चन आसुछि ताहाले नीलमणि विद्यारत्न कथा आपन माने आंसर देबे जदी आपन को पचारा गला फाउंडर किए ताहाले आपन माने सुधल देव को आंसर देबे बट सब माने भूली जाउछो कोन करिवो एग्जाम मुंड ऊपर फिर भी भूली जाउछो हो देखो कौन होची डायनामिक एडिटर ऑफ द नेशनलिस्ट जर्नल संबलपुर हितासेनी किए हु स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर ओडिया लिंग्विस्टिक यूनिफिकेशन फ्रॉम वेस्टर्न ओडिशा ही वाज नीलमणि विद्यारत्न ता सहित मन रखो नेशनलिस्ट मंथली जर्नल पेपर आपनकर थिला संबलपुर हितासेनी एडिटेड हितला नीलमणि विद्यारत्न को द्वारा advocated Odia language, literature, education and social reform. ता सहित important तीनटा पॉइंट मन रखंतु गौरी शंकर रहिथिले फाउंडर एंड एडिटर ऑफ उत्कल दीपिका किंतु जदी बैकुंठ अरे रो 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 एठी त मानकु फाउंडर पछा देली कि ना 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 फाउंडर आपनकर सुधल देव
मोटे उत्कल दीपिका भाभी कहिदेली रुह 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 सुधल देव आपनकर राजा थिले ही वाज द फाउंडर ऑफ द कोन हितासेनी रो ओके एंड एठी बैकुंठनाथ दे को कहा जाउछ इज द पैटर्न ऑफ ओडिया लिटरेचर एंड प्रिंटिंग प्रेस एंड धरणीधर भूया आपनकर ट्राइबल लीडर एंड द फ्रीडम फाइटर अमंग द ऑप्शंस नेक्स्ट क्वेश्चन चलो मते को व्हिच एंशिएंट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी the darshan was systematically compiled by the sage Kannada and focuses heavily on the atomism and the कोन pluralism atom आपनकर फर्स्ट स्टार्ट हेतिला atomism and pluralism रु आपनकर आरंभ होइतिला क्विकली आंसर दियो जल्दी आंसर दियो ओके आंसर गाइस आंसर भाई रे तमे माने एमिति लिखियो जदी म ओडिया पढला बेले कोई टाइम पड़े ओके राइट आंसर एनीवन ऑप्शन बी सहित जाउछ समस्ते पक्का वेरी गुड वैशेषिक होचंदी राइट आंसर सो वैशेषिक द स्कूल ऑफ एटमिज्म एंड प्लुरलिज्म रो ऑथर और हमें फाउंडर कहूचे सेज कन्नड़ रो थिले जे वैशेषिक एंड मन रखंतु फाउंडर सिस्टमैटिकली कंपाइल्ड बाय द सेज कन्नड़ आपनकर एंड अनदर ऑफ द वैशेषिक सूत्र एटा थिला आपनकर दीटा जाको आंसर सो मन रखंतु टोटल आपनकर की कांसेप्ट कोन थिला ना एटम आपनकर अणु आरंभ करथिले माने अणु को डिस्कवर करथिले डिस्कवर मींस कोन हां डिस्कवर करथिले देन आपनकर कॉम्बिनेशन थिला डाइट ट्राइड एक्सेट्रा ए सब आपनकर बाहर करथिले कोउथिरे ना ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड आपनकर टोटल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कोन अछि ताकू स्टार्ट करथिले कांसेप्ट आनिथिले एंशिएंट पीरियड रु के थिले ना आपनकर ऋषि कन्नड़ नेक्स्ट क्वेश्चन मते को द डायनामिक ट्राइबल अपराइजिंग नोन एज द भुया मेलिस डायनामिक ट्राइबल अपराइजिंग नोन एज द भुया मेली गाइस ओके हां जितेंद्र सो मते कोंतु भुया मेलिस 1891 रो 1893 भीतर हेतिला इन द केउंझर दैट वाज लेड बाय व्हिच charismatic revolutionary against the oppressive local state machinery कौन होगा राइट आंसर मते को जल्दी आंसर DNC धरणधर नायक वेरी गुड सो राइट आंसर आपनकर कोन धरणधर नायक सो सी ना भुया मेलिस आपनकर हेतिला केउंझर रे कहा द्वारा हेतिला ना आपनकर धरणधर नायक सब आंसर आपनकर तळे मिली जिवो सो देखो द भुया मेलिस वाज अ पावरफुल ट्राइबल अपराइजिंग इन द केउंझर 1891 1893 हेतिला अगेंस्ट द ऑपरेसिव लोकल रूलर्स and unjust policies against हेतिला पीरियड आपन को मेंशन करिछि रीजन मेंशन करिछि नेचर कोन थिला ट्राइबल अपराइजिंग पई थिला that was a melis means uprising in the local context and the people involved in their Bhuya tribes and other tribal communities थिले मेन आपनकर लीडर के थिले धरणीधर नायक थिले is that clear next question चलो मते को who was the only Odia woman delegate to actively attend the historic salt satyagraha and lead a batch of women freedom fighters at the Inchudi site in Baleswar that means आपन को पचारुछि कि only women नुह जे women आपन को लीड करिथिले इंचुडी वाला सत्याग्रह सेटा मते राइट आंसर दियो साला देवी मालती चौधरी रमा देवी कुंतला कुमारी सापते मान को भीतर राइट आंसर कोन हबो मते को जल्दी मा ऑफ ओडिशा पक्का मा ऑफ ओडिशा में कहा को कंसीडर करू छे ना रमा देवी को सी ना रमा देवी द ब्रेव डॉटर ऑफ ओडिशा में हम कंसीडर कर छे मा ऑफ ओडिशा द ओनली ओडिया वुमेन डेलीगेट टू अटेंड द सॉल्ट सत्याग्रह एंड लीड अ बैच ऑफ वुमेन फ्रीडम फाइटर्स आर द इंचुडी बालेश्वर वाला आपण माने ऑप्शन को रिलेट करी की मने रखिबे इज दैट क्लियर देन कोन कहूची ना द सॉल्ट सत्याग्रह आपनकर लॉन्च हेतिला महात्मा गांधी द्वारा केबे ना 1930 रे हेतिला and was a nation wide civil disobedience आपनकर थिला जोडा को समस्त पार्टिसिपेट करूथिले आफ्टर दैट रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल कोन थिला रमा देवी को विषय आपण माने 1899 नो 1984 1899 तांकर बर्थ ऑफ ईयर एंड 1984 तांकर डेथ ऑफ ईयर थिला सो ताकू भी आपण माने मन रखि दंतु लीडर ऑफ द इंचुडी बालेश्वर आपनकर बालेश्वर रमा देवी थिले एंड तांको सहित बहुत सारा करेजस वुमेन माने जेमिति कि आपनकर तांकर निजर कोन मालती चौधरी से भी आपनकर पार्ट करूथिले तो ए सब जिंस रमा देवी टोटल डायलॉग कोन थिला ड्यूरिंग द Inchudi salt satyagraha that also you have to keep in your mind that I believe that women should come forward courageously and take an active part in the freedom struggle that was the line while
जेते बेले से कोन ना इंजुरी खाली सॉल्ट सत्याग्रह करूथली दैट वाज द लाइन जोटा को वुमेन मानु को एनकरेज करूथला टू पार्टिसिपेट देयर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन कहूची ना द टेंपल आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द फेमस मुक्तेश्वर टेंपल ओके मुक्तेश्वर टेंपल कथा कहूची in Bhubaneswar represents a crucial transition phase between which two architectural periods of Odisha. Architectural periods of Odisha कहूची that means आपनकर दीटा डायनेस्टी कथा आपन को एटी पचारुची एस आपन को कोन पचारिबो ना दीटा आर्किटेक्चर किंतु ओडिसा रे देखो बहुत ट्रिकली एटा क्वेश्चन आपन को पचारुची काहे कि कारण दीटा आर्किटेक्चर कथा पचारुची माने सागे सागे पिला आर्किटेक्चर को मार्क करिवे नॉट की डायनेस्टी देखो मन रखंतु द्राविड वाला आर्किटेक्चर ओडिसा रे बिल्कुल नाही ओडिसा रे ओनली कलिंग अछि जोटा कि पार्ट ऑफ द नगर द्राविड कहिले आपण माने जानि संदी कोन दैट इज द साउथ रो कोन से पार्ट ओडिसा रे नाही तो एटा त आपनकर एलिमिनेट हे गेला राइट आंसर आपनकर कोन हबो ताले कोन मते जल्दी ऑप्शन बी बड़ ऑप्शन अरे वाह हो देखो तो राइट आंसर आपनकर कोन हे गेला ना दैट इज द आली भौमकर एंड मैच्योर सोमवंशी स्टाइल हमर ओडिसा रे अछि केयरफुली क्वेश्चन को हैंडल करिवो हैला नेक्स्ट कोन कहू देखो ना फर्स्ट थिंग मुक्तेश्वर टेंपल आपनकर केते ना 10th सेंचुरी कॉमन एरा रे हेची दैट मींस आपनकर 11th सेंचुरी जते बेले कहि दोछि आपण माने जानि संदी लिंगराज टेंपल जते बेले 12th सेंचुरी कहूछि आपण माने जानि संदी जगन्नाथ टेंपल जते बेले 13th सेंचुरी कहूछि आपण माने कहउछंदी कोणार्क टेंपल तो या पूर्वरु आपनकर हेची द ज्वेल ऑफ ओडिसा टेंपल आर्किटेक्चर जाको हमें कंसीडर करूछे मुक्तेश्वर टेंपल जदि आपण क्वेश्चन पचाला ज्वेल ऑफ ओडिसा कोन ओनली कल्चर जदि ओडिसा रा कल्चर कथा पचारिला ताहाले जगन्नाथ मंदिर सहित रिलेट करिवे जदि ओडिसा रा ज्वेल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर पचारला ताहाले आपण माने रिलेट करिवे कहा सहित टेंपल कल्चर पचारले जगन्नाथ टेंपल आर्किटेक्चर कहिले मुक्तेश्वर टेंपल व्हाई दिस इज फेमस फॉर ना एटा होची तारो तोरण स्टाइल गेटवे जोटा कि मु तमान को सब बेले पढौथि सो दिस इज द गेटवे जोथि पई कि एटा गुटे यूनिक करूछु रादर देन द अदर टेंपल्स प्रेजेंट इन द ओडिसा एतिक जिंसा क्लियर सो केबे हेतिला ना ड्यूरिंग 7th थ्रू 8th सेंचुरी आपनकर हेतिला सिंपल आपनकर देखंतु फास्ट आपनकर ए टाइप रो ही गठन हेतिला तापर आपनकर तोरण स्टाइल गेटवे हेतिला तो मुक्तेश्वर टेंपल आपनकर 10th सेंचुरी रे थिला गंगा स्टाइल टेंपल सब 11th थ्रू 13th सेंचुरी रे आसी गला तो ता पूर्वरु आपनकर टेंपल थिला नै आज्ञा हो थिला लक्ष्मणेश्वर भरतेश्वर शत्रुघ्नेश्वर ए जो टेंपल आपनकर भौमकर पीरियड रे तयारी हेतिला दैट वाज प्रीवियसली आपनकर 5th थ्रू 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी पर्यंत तयारी हेतिला ओके दिस इज नॉट द फर्स्ट टेंपल वी आर कंसीडरिंग अबाउट बट दिस इज द मेन टेंपल जोटा कि हमर ज्वेल ऑफ ओडिसा आर्किटेक्चर बोली हमें कहि पारुछे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु मते कहंतु द गोनासिका हिल्स इन द केउंझर डिस्ट्रिक्ट व्हिच serve as the source of the Baitarani river are geographically part of which specific mountain sub-range कौन हबा राइट आंसर मते को जल्दी जो माने पर्यंत चैनल को लाइक करिनो शेयर करिनो काइंडली टिके शेयर कर दियो हैला मु तो राणा फण पखेबिनी कि तुम माने शेयर करियो बोली बट स्टिल गाइस टिके शेयर कर जदी लाइक माने क्लास को पसंद करछ ताले शेयर कर नियत आंसर दियो हां यार आंसर दियो द गोनासिका हिल इन द केउंझर डिस्ट्रिक्ट व्हिच serve the source of the Baitarani river as geographically part of which specific mountain sub-range कथा कहूची ताला एलिमिनेट करिबा प्रोसेस रे आपण माने पळेबे सो ऑप्शन ए काहे कि जितेंद्र हाथ टिकी कोन गुरुचो कोथि पई आसो सिमिल पार सहित आपण माने जाउछंदी कोथि पई सिमिल पार सहित जाउछंदी जदी गोनासिका हिल कथा कहूची अच्छा केउंझर कहूची बोली आपण माने सिमिल पार सहित जाउछंदी बेरी सिमिल पार नासिफ हो या फिर सिंगभूम केउंझर मयूरभंज क्रैटन हो एठी तो मयूरभंज केउंझर अछि तथापि आपण माने ऑप्शन ए चूज करछंदी ग्रेट महेंद्रगिरी कहूची ताको एलिमिनेट कर देबा देवमाली हाइस ताले सब एलिमिनेट हैला पर आपन को राइट आंसर कोन हे गला ना ऑप्शन बी हे गला कोन हे गला ऑप्शन बी सिंहभूमि केउंझर मयूरभंज क्रैटन हे गला केमिति हैला आसंदु देखिबा सी कोन दी हैला रे बी देखो कोन कहूची ना गोनासिका हिल केउंझर आपन को हियर इज योर ओडिसा मैप को टोटल कंसीडर कर दियंतु नॉर्दर्न साइड को आपन को अटैच हेकि अछि केउंझर आपन मान देखि पारुथुवे केउंझर आपन को गोनासिका पर्वत रु कोन बाची बैतरणी नदी आसी के बे ऑफ बेंगल सहित मिसी छी ब्राह्मणी को मर्ज कला पर देन इंपोर्टेंट थिंग आपनकर कोन कहूची आपनकर देखन माउंटेन सिस्टम ऑफ ओडिसा जदि आपन पचारची जो सिमिलपाल मैसिव एटा आपनकर नॉर्दर्न ओडिसा पार्ट ऑफ द सिमिलपाल बायोस्फीयर रिजर्व जदि आपन को बाहुडा रिवर पचारी था सॉरी बाहुडा कह देली बुढ़ा बळंग जदि आपन को बुढ़ा बळंग रिवर कथा पचारी था ताहाले आपन माने सिमिलपाल मैसिव सहित कनेक्ट करि थाबे am I clear then आसो सिंहभूमि केउंझर मयूरभंज क्रैटन एटा आपनकर कोन दिस इज द प्री कैम्ब्रियन अपलिफ्ट ब्लॉक जोटा कि आपनकर नॉर्दर्न ओडिसा सहित अटैच हेकि अछि दैट मींस ए ब्लॉक रु ही आपनकर कोन ओरिजिन हेकि बैतरणी रिवर जदि एटा ऑप्शन न थांदा ताहाले आपन माने नेक्स्ट ऑप्शन के मे बी जाई थांते ओके नेक्स्ट कोन अछि महेंद्रगिरी एटा आपन माने जानि संदी गजपति डिस्ट्रिक्ट रे आपनकर स्टेज हेकि अछि अप टू गंजाम पर्यंत देन आपनकर देवमाली हाइट्स दैट इज द टोटल आपनकर कोरापुट रे माने ईस्टर्न घाट रे आपनकर प्रेजेंट अछि एलिमिनेशन प्रोसेस रे भी गल्ला
जदि ऑप्शन ने ए जो सिंहभूमि केउंझर मयूरभंज ट्रैक्टर न थांता ताहले आपण माने मारी थांते नियरेस्ट सिमिलपाल मासिव को बट स्टिल दैट वाज द पार्शियली राइट हेतांता नॉट ऑलवेज ट्रू ओके अरे बा पुणी भी बड़ ऑप्शन सब बेले बा बी आ कोन बुझिबो त माने आस मते को व्हिच माइनर ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहिछि ओके कीप इट इन माइंड इन साउदर्न ओडिशा सर्व has a geographic boundary between the Ganjam district of Odisha and the Srikakulam district of Andhra Pradesh कहिलो मते कोन हबो राइट आंसर आउ थरे कहिली आपनकर ओडिशा सहित आंध्र प्रदेश सहित आपनकर कोन कंबाइन होछि क्विक मेसेज ओडा करी के डिलीट मारुछ कोन पई लाइक फाइक तो करू ना तुम मानकर गोटे मन ना को जल्दी कौन हम बाहुडा रिवर ऋषिकुल्या रिवर वंशधरा रिवर नागावली रिवर फसी जाइए सब बैडली बोधे सब बाहुडा रिवर मारलनी सब पुणी वंशधरा भी मारलनी भूलभाल करनी देख गंजाम डिस्ट्रिक्ट कहूँ सहित कौन श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश कहूँ आस ताको ऑप्शन वाइज चूज करबा कौन हम राइट आंसर एक्चुअली आपनकर कौन ना बाहुडा रिवर देखो केमिति हबो बाहुडा रिवर काहे की फर्स्ट थिंग आपण माने कंसीडर करंतु कोठी रहउची बाहुडा रिवर ओरिजिन हेजी कोठु एठु मिसिची कोठी आपनकर एठी आपनको पचारुची कोन ना ईस्ट फ्लोइंग रिवर ता माने आपनकर एठु ओरिजिन हेकी आसी की बे ऑफ बंगाल एठी मिसि जाईची ता माने कोन करिची ना देखंतु ओडिसा रे पार्ट अछि ओडिसा रो ओरिजिन हेची किंतु एठी आंध्र प्रदेश को आपनकर सेपरेट कर दोछि ना नाही मते को माने आंध्र प्रदेश भीतर पसिकी जाई की कोन ना बे ऑफ बंगाल सहित मिसि जाउची तो ओरिजिन कोठु ना ईस्टर्न घाट गंजाम रो ओरिजिन हेची फ्लो करूची ईस्ट आड को फॉर्म बाउंड्री बिटवीन गंजाम एंड श्रीकाकुलम नॉट ओडिशा एंड श्रीकाकुलम ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश कहले वंशधरा हबो कंप्लीटली किंतु जदि पर्टिकुलरली गंजाम एंड श्रीकाकुलम कहूची गंजाम एंड आंध्र प्रदेश कहूची ताहाले आपण माने कंसीडर करबे बाहुडा द स्मॉलेस्ट रिवर देन कोन कहूची बे ऑफ बंगाल को आपनकर श्रीकाकुलम थारे ये एम्प्टी हे जाउची एंड आपण माने देखि पाथुवे टोटल आपनकर स्ट्रक्चर जदि हमें बाहुडा रिवर कहूचे दिस इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर गंजाम एंड श्रीकाकुलम जदि ऋषिकुल्या कहूचे दिस इज आल्सो ईस्ट फ्लोइंग रिवर किंतु ये गंजाम गजपति भितरे कोन लिमिट अछि देन आपनको जदि वंशधरा रिवर कहूचे दैट इज गजपति एंड श्रीकाकुलम भितरे नॉट कि गंजाम एंड श्रीकाकुलम कारण आपनकर ओरिजिन हेची कोठु वंशधरा रिलेट करि परिबे देन मते कोन नागावली रिवर कहले गजपति एंड ये विजयनगरम तो श्रीकाकुलम विजयनगरम एंड आपनकर कोन ए गंजाम श्रीकाकुलम गजपति विजयनगरम ए जिंस उडा करे आपण मान को कंफ्यूज करिवो एंड आपण माने कंफ्यूज हेबे मध्य हैला सेथि लागि क्वेश्चन उडा को टिके भलो से टैक्टफुली देखिबे गंजाम श्रीकाकुलम रो उत्तर रे अछि वंशधरा नागावली हां yes चलो next मते को the Satkosia Gorge through which the Mahanadi river carves its path it is a geomorphological feature dividing which two major physiographic regions of India तो कौन हमारा right answer tell me quick भाई रे की ओडिया सैल्यूट मोरा ओडिया मन नाही से जो ओडिया लेखुछन से देखि देला बेलु संगे संगे नजर को पळे आछी हो देखो कौन कहिछि मते कुआ द सातकोसिया गॉन्ड कथा कहिछि ता माने कोठी की जीवो अनुगुल को तो निहाती जीवो हैला तो कौन कहिछि द सातकोसिया गॉन्ड थ्रू व्हिच द महानदी रिवर carves its path is geomorphologically feature dividing which two major physiographic region कथा कहउछि दैट मीन छोटनागपुर प्लेट्यू एंड डिकान प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड और नॉर्दर्न हाईलैंड देखो आको तो माने आंसर कोन दोजो देखे पूरा गोलमाल करी कि ए एंड सी भीतर तो माने कोन हजि गरनी राइट आंसर आपनकर एक्चुअली रे कोन हो ना ईस्टर्न घाट एंड सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू देखिबा केमथि हेछि ना सातकोसिया गॉन्ड द महानदी रिवर पाथ थ्रू द नेचर्स कोन थिला ग्रैंडियर ताकू देखंतु फास्ट कोन कहिछि लोकेशन फास्ट थिंग पढि दियंतु एटा ना तो सातकोसिया गॉन्ड कार्व्ड आउट महानदी रिवर इज अ मैग्निफिकेंट geomorphologically feature and forms a natural divide between two major physiographic region of India what are those ना एठी देखंतु कोन रहिला ना सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू एठी रहिला एपट रहिला ईस्टर्न घाट रो महा एंड एठी आपनकर फ्लो हेची कोन ना महानदी तो बाउंड्री आपनकर कोठी रहिला ना ईस्टर्न घाट रे एंड आपनकर सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू भीतर ये बाउंड्री शेयर करूची दैट मींस द सातकोसिया गॉन्ड थ्रू व्हिच द महानदी रिवर carves the path is a geomorphologically feature dividing the eastern ghat and the central indian plateau काम खत्म सो रहिला मझिरे कोन एपटे ईस्टर्न घाट एपटे सेंट्रल एंड ताकू पैप्ड आउट कर देछि किए ना महानदी टोटल लेंथ महानदी रो 851 कोठी कोठी आपन को 894 देथिबो कोठी कोठी 900 अप्रोक्सीमेटली देथिबो तो वैरी करिवो टोटल आपन माने कोन व्यस्त हेबे नै आउट ऑफ दैट 494 किलोमीटर ओडिसा रे दैट इज द लॉन्गेस्ट वन सॉल्व करूची माने फ्लो करूची हैला देखो
देन कोठु फ्लो हेची ना छत्तीसगढ़ ओडिसा रो अपन छत्तीसगढ़ रो आपनकर ओरिजिन हेची सिहा हिल अमरकंटक प्लेट्यू एटा ऑलरेडी तमन को पढेची एमटीज हेची बे ऑफ बंगाल ले देन प्रोवाइड्स वाटर टू द इरिगेशन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर एक्सेट्रा हीराकुद विषय भी आपण माने जानि छथि ओके जदि लार्जेस्ट रिजर्व पचारिबा आर्टिफिशियल रिजर्व ताहले भी आपण माने ओडिसा रे कंसीडर करि परिबे हीराकुद रिजर्व ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मते को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन डिफाइंड बाय ICAR ओके into how many distinct agroclimatic zones is the state of Odisha classified state of Odisha classify heichi keteta agroclimatic zone ne mate kohtu quick as answer दियो जयंत कुमार क्लास रो पीडीएफ वेदांग क्लासेस रो टेलीग्राम चैनल ले मिलिबो क्लास एंड पर्यंत रुह मु तमान को स्कैनर प्रोवाइड करबी संगे संग सेइठु मोबाइल लो स्कैन करि दबो फटकिना जॉइन कर दबो हैला 10 श्योर कोन कोन अछि 10टा मने अछि देख लिखिलो देखि हरिहर गुड इवनिंग 36 मिनिट ना 6 मिनिट तले क्लास माने 6 रे ही 10 टा 6 रे क्लास रेटला सो 30 मिनिट तमे लेट अछ ओके जीवा देखो सो राइट आंसर आपन करके दे ना 10 हबो सी कोटा टोटल 10 टा जोन जस्ट हैव अ लुक हियर आसो तो फर्स्ट थिंग आपन 10 टा जानि गले ना agroclimatic zones are areas with distinct climate soil and topography that influence farming systems crop planning and the agricultural development jodi mind ko asibo ki agroclimatic zone kon first thing agro miru agriculture climatic ru climate माने agriculture को माने चाष को सुहाइला भलिया हमर कोन पानी पागो हेतिबा दरकार सिंपल थिंग तो ताकू नै कि ओडिसा रा क्लाइमेट को 10 भाग डिवाइड करा जाय 1 2 3 4 करी अपन मान नीचे नीचे देखि पारुथबे बट देखो ना गुडा कोन ना नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू जोडा कि नॉर्थ वेस्टर्न में अछि नॉर्थ सेंट्रल प्लेट्यू सेंट्रल को जाय अछि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू नॉर्थ ईस्टर्न में अछि नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न मन रहला नॉर्थ सेंट्रल नॉर्थ ईस्टर्न वेस्टर्न सेंट्रल तीनटा पड़िला ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स साउदर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन साउदर्न कोस्टल साउदर्न सेंट्रल प्लेट्यू जोडा कि साउदर्न सेंट्रल को गला गोटे आपनकर गला सेंट्रल गोटे नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न तापर गला ईस्टर्न गोटे खाली ईस्टर्न गोटे आपनकर कोस्टल गोटे साउथ कोस्टल गोटे वेस्टर्न ऑन्डुलेटिंग गोटे मिड सेंट्रल गोटे कोस्टल सलाइन एमिति है कि टोटल आपनकर 10 टा जदी जो माने मन रखि परिबे दैट्स वेल एंड गुड नहले खाली 10 टा नंबर ही मन रख हैला चलो जीबा नेक्स्ट सोई पडिथिला हरिहर केमती निद भांगिला आसो नेक्स्ट क्वेश्चन मते कुआ आसो मते को हुई स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन वेस्टर्न ओडिशा act as an important wildlife corridor connecting the Mahanadi river basin ecosystem with the forest of Chhattisgarh आसा देखिए आंसर देला कोन कहउछ क्विक आंसर यार कोन दउछ ए भाई तमे ओडिया रे लेखनी रे मु तळे पड़ी जीबी प्लीज ए भाई मु तम गोड तळे पड़ी जाउची प्लीज अरे ओडिया लेखुछ न पढ़ी कि रही होनी पढ़िला बेले मो मुंड वेट ओडिसा रा अधिकांश अंचल ईस्ट एंड साउथ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एग्रोक्लाइमेटिक जोन पूर्व दक्षिण पूर्व माने कोन माने इंग्लिश रे लिखिलो तापरे पुनी ओडिया रे ट्रांसलेट करि जो काई केंदी होउछ त माने ओके देखो सो हुई स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोन कहउछ राइट आंसर कोन कहउछ देखि आंसर देलो आंसर दियो देब्रीगढ़ पाड्रमा सुनाबेड़ा खलासुनी ऑब्वियसली आपण माने ऑप्शन ए को दे देउथबे ना कि बोल भूल हे गेला आपण राइट आंसर होचे कोन सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखा केते जण ए देइछ नाइ रे सब भूल भाल देना ठीक देइछ हो देखो सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोन कहउछ ना द वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कनेक्टिंग द महानदी रिवर बेसिन इकोसिस्टम विथ द छत्तीसगढ़ जस्ट हैव अ लुक हियर कोठ रहउछ आपण सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एट रहिला छत्तीसगढ़ रो सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ता सहित कनेक्ट करछि कोठी ना एट रहउछ आपण महानदी रिवर बेसिन सो एक्ट एज एन इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कनेक्टिंग द महानदी रिवर बेसिन इकोसिस्टम विथ द फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ दैट मींस ए भीतर आपण जति कि एनिमल्स रहउतबे दे आर होली डिपेंडेंट अपॉन द महानदी रिवर होना नहीं मते देखो सो लोकेशन कोठी ना नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न ओडिसा रे आपन ये प्रेजेंट रहउची छत्तीसगढ़ ये रहउची हमर बॉर्डर हैला छत्तीसगढ़ रा बॉर्डर ता भीतर देखो एठी टच करिछि नोटिफाइड केबे हेतिला एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें कहि पारे WLS आपनकर 1985 रे टोटल एरिया 1012 स्क्वायर किलोमीटर रिवर बेसिन महानदी रिवर बेसिन इज द फीडिंग वाटर प्रोवाइड करूची ता सहित सिग्निफिकेंस वाइल्ड कॉरिडोर बिटवीन द महानदी रिवर बेसिन इकोसिस्टम एंड छत्तीसगढ़ त मन रखंतु आपनकर सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन वेस्टर्न ओडिसा रे आपनकर प्रेजेंट अछि क्लियर कोन कोन आपनकर देखा जाय एनिमल्स जस्ट हैव हियर
आपनकर फोना एटी सपोर्ट आपनकर टाइगर लियोपार्ड स्लॉथ बियर चीतल संबर आपनकर संबर ओडिसा रो एनिमल हो ना स्टेट एनिमल ताको मन रखन नेक्स्ट क्वेश्चन आपण मन द डायनामिक कोस्टल लैंडफॉर्म फीचर नोन एज व्हीलर आइलैंड अरे व्हीलर आइलैंड केबे एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड को चेंज हेतिला ना टिके मते ईयर ता कहि दियो प्लीज गाइस ईयर ता टिके लिखि दियो जल्दी आंसर दियो आंसर 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 को ईयर आपण करे ये हेतिला चंद्रशेखर आज तमे क्लास रे अछो चंद्रशेखर पुनी आजाद लिखलणी ना रे कोन माने मु जानि भी कोन केमती ब्राह्मणी बैतरणी अच्छा वेरी गुड तो राइट आंसर आपनकर कोन ऑब्वियसली ब्राह्मणी बैतरणी रेट लाइक कॉम्प्लेक्स ही हबो व्हीलर आइलैंड कहले आपन को पचाली ईयर केबे ईयर के कहलो नाही माने एते बड़ गधांड गधिस माने तुम सब आज क्लास रे अछो अरे वाह चंद्रशेखर वेरी गुड केबे हला ना 2015 रे आपनकर चेंज हेछि नेम फ्रॉम द व्हीलर आइलैंड टू द एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड आसो देखियो तांग विषय रे ना फर्स्ट थिंग मन रखी दियंतु ब्राह्मणी एंड बैतरणी डेल्टा कॉम्प्लेक्स रे आपन कर ये हेजी एंड द डायनामिक कोस्टल लैंडफॉर्म व्हीलर आइलैंड नाउ जोटा एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा is geologically a product of sediment depositions from the Brahmani and Baitharani. Location कोन कोठी आपनकर अछि ना बे ऑफ बेंगल सहित एमसी के अछि भद्रक रे रहिबो रिनेम्ड एज द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कोठी आपनकर रहउछि जस्ट हैव ए लुक एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जोटा आपनकर व्हीलर आइलैंड एठी आपनकर प्रेजेंट रहउछि किंतु ब्राह्मणी बैतरणी रो डेल्टा आपनकर कोठी ना टोटल एटा रहउछि ब्राह्मणी बैतरणी रो डेल्टा सिस्टम तो याकू कवर अप करी के आपनकर कोन ना एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड प्रेजेंट अछि इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मते को व्हिच यूनिक फिजियोग्राफिकल adaptation is showcased by the हेरिटेरा फेम्स माने सुंदरी वन जोटा को हमें कहूचे मैंग्रोव फॉरेस्ट तो सुंदरी रो बोटानिकल नेम होचे आपनकर हेरिटेरा फोम्स मन रखियो तो मैंग्रोव स्पीशीज फाउंड abundantly भितरकनिका टू कॉफ विथ हाई anaerobic soil conditions on which जल्दी को ताको हमें कोन कहूचे दिस इज अ विविपारस जर्मिनेशन दिस इज अ न्यूमाटोफोर जोटा को हमें ब्लाइंड रूट एक्सटेंशन कहूचे और द प्रॉप रूट और द सॉल्ट एक्सक्रीटिंग लीव्स ओनली जल्दी ब्लाइंड रूट पक्का समझते अरे वाह ओ बढ़िया आंसर दो जाओ कोन न्यूमाटोफोर्स वेरी गुड राइट आंसर आपनकर कोन न्यूमाटोफोर्स और द ब्लाइंड रूट्स हमें कहूचे जस्ट हैव अ लुक हियर द सुंदरी मैंग्रोव भितरकनिका थ्राइविंग इन हाई एनारोबिक सॉइल कंडीशंस कोन रहउछ तार सॉइल कंडीशंस देखो इटु फास्ट थिंग आपनकर को फैमिली रु ये बिलोंग करूची ना मालवेसिया फैमिली रु ये बिलोंग करूची हैबिटेट कोन मैंग्रोव फॉरेस्ट ब्रैकिश वाटर स्वाम्प्स एंड टाइडल एरियाज मन रखंतो आपन कहिछि जदी आपन को पछारिला मैंग्रोव फॉरेस्ट देन आल्सो आपन माने भितरकनिका को कंसीडर करिवे जदी टाइडल फॉरेस्ट जदी लिटोरल फॉरेस्ट कहिला ताहाले बे आपनकर सेम नेम हबो जस्ट लाइक आपन माने कहि परिवे दे वर द कोन प्रतिशब्द हैला सिनोनिम्स चलो सो द हेरिटेरा फॉर्म्स आपनकर सुंदरी सहित कंसीडर करिवे नेक्स्ट मते को द हिस्टोरिक कोन अरे मच्छी कोन ओके चल ओके दियो आंसर एबार यारो why question is so confusion question confusion कोन पे रहइबो क्वेश्चन तो बहुत इजी अछि बहुत इजी लेवल आज अछि आसो मते को द हिस्टोरिक खडियाल प्लेट्यू ओके is an elevated geographic feature located primarily in which district जदि आपन को खडियाल प्लेट्यू कथा पचारुची वो हम राइट आंसर देबी हैला नुआहांडी कलाहांडी सॉरी नुआपड़ा कलाहांडी बलांगीर एंड बरगढ़ वो ऑप्शन ए एक्सप्लेनेशन किछि देखा जाउनी समस्त को देखा जाउची मौसमी तमको छाडी की हो दियो राइट आंसर कोन होची ऑप्शन नुआपड़ा हैला आंसर देखा होची तो तुमको आंसर देखा जाउची तो मौसमी तापर पीडीएफ पाइला पर एक्सप्लेनेशन देखि दबो हैला तो खडियाल प्लेट्यू आपनकर कोड प्रेजेंट हियर इज द खडियाल प्लेट्यू एठी मैप टा खाली देखि दियो तो ओडिसा रा आपनकर नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट एठी प्रेजेंट रहउची एंड नुआपड़ा ए पॉइंट रे आपनकर खडियाल प्लेट्यू प्रेजेंट रहउची लोकेशन वेस्टर्न ओडिसा प्राइमरीली दिस इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नुआपड़ा टाइप आपनकर एलिवेटेड प्लेट्यू गोटे अपलैंड बोली ताको हमर कोन ए टाइप रे गोटे मेजर एरिया आपनकर एलिवेटेड हेकी अछि दैट्स व्हाई ताको कोन तार नेम आफ्टर द खडिया टाइप गोटे आपनकर सेठी अछि गोटे लोकल ट्राइब तो खडिया ट्राइब ना अकॉर्डिंग आपनकर खडियाल प्लेट्यू रखा जाइछि आफ्टर दैट कोन मेन रिवर आपनकर सेठी तेल रिवर एंड जोंग रिवर नियरेस्ट तार रहउछि वेजिटेशन ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हेतु रहउछि जो टाइप रे वेजिटेशन आपनकर कोन जानिथिबे बेसी टाइप रे कोन मिलेट ऊपर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा चलो मते को
Which of the following major deep structural fault lines passes through central Odisha and is responsible for minor seismic activities in the Talcher-Angul industrial belt? कौन हमारा right answer? Quick. आज क्वेश्चन सब भल आसीथिला मिस्टर विश्वजीत को शिफ्ट रे एग्जाम तमरो थिला शिफ्ट कोन थिला तमरो फर्स्ट सेकंड थर्ड को शिफ्ट रे थिला एग्जाम ओडिसा रे कोन क्वेश्चन सब आसीथिला थर्ड रे अरे विश्वजीत तमरो थर्ड रे थिला त मते कॉल भी करलनी फीलिंग सैड ओके ऐसा देखो which of the following major deep structural fault lines passes through central Odisha and is responsible for minor कौन हमारा राइट आंसर दिया ठीक है ऑप्शन ए हां देखि देगी तो लंबा ऑप्शन आउ तमे रहउथबो की लंबा ऑप्शन देखि के डेई पडुछ आउ हो देखो कोटा रहउची महानदी शियर जोन देखि दियो ऑप्शन ए ओके तो महानदी शियर जोन महानदी जोटा को हमें ग्रावेन कहउची दिस इज अ डीप स्ट्रक्चरल फीचर कौन रहउची आपण माने देखि दियंतु सो फर्स्ट थिंग आपनकर कौन रहउची को जगह अनुकूल देकी देखो एटा स्ट्रेस हेची This is the shear zone. कहीं के टाको shear zone कहा जाउची फर्स्ट थिंग देखो महानदी shear zone that means महानदी graben is a major deep structural fault line that means it passes through the central Odisha देकी trending in a north east to south west direction को जाईची this tectonic feature is associated with the minor seismic activities that means जत्ते बेले भी आपनकर कोनोसी छोटो बड़ा किछि भी आपनकर कोन भूमिकंप फील करूछंती ओडिसा रे लोक माने ताहाले बिकॉज़ ऑफ दिस क्रैक एटा गुटे इंटर क्रैक आपनकर प्रेजेंट अछि दिस इज द शियर जोन जोतरे आपनकर सेस्मिक एक्टिविटीज लोक माने फील करि पाछन को लोक माने ना अनुकूल ठु नै कि ढेंकानाल माने हम घर देखि जाइछि बारी ओके सो देखि दियंतु कोन कोन रहउछि को डिस्ट्रिक्ट आपनकर फेवरेट रहउछि मेन थिंग आपनकर एटा जदि ओडिसा मैप देखुछथि ताले एटी पूरा सेंटर रे आपनकर एई क्रैकटा प्रेजेंट अछि दिस इज द जोन रन्स थ्रू द सेंट्रल ओडिसा इन द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट हैला एई पुणी लेखिला ओडिया रे कहीं प्लीज दया कर मो ओडिया रे लेखनी तमे आ रेस्पेक्ट दे पानी मो ओडिया लैंग्वेज को माने मो हृदय रो रेस्पेक्ट झरी पड़ोची बुझुछ त अनुकूल शिल्प अंचल ओडिसा रो मध्य भागर महानदी नदी उपत्यका शिल्प मंडल रे अवस्थित जहा कोयला और शक्ति शिल्प रे धनी मो आज ठो इंग्लिश वर्ड यूज करबिनी आज इंग्राजी शब्द किछि व्यवहार करिबी नाही मटा को प्रण नउची माने आज गोटे दिन मते क्षमा करंतु आगामी क्लास सॉरी आगामी कक्षा रु मु आपनकर जेते भी कक्षा नेबी सब ओडिया रे नेबी ओके डन निश्चित चलो मते को नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन डोमिनेट्स द ड्राई interior hilly tracts of the Balangir, Sambalpur and Jharsuguda district. Answer दियो. Speed जिवा 50 questions. हाँ मैं जाऊँगी. उच्च कोटि रोडिया है ना. आसा देखो. So what type of vegetation dominates the dry interior hilly tracts of the Balangir, Sambalpur and Jharsuguda district? Tropical semi-evergreen, tropical deciduous, dry deciduous. तो देखो जब Western Odisha कहूँ तो obviously अपन माने dry को जिबे. कौन जिबे? ना dry deciduous को. Sure, very good. So right answer कौन? ना dry deciduous है गला. So just have a look here. Total अपन करा कौन? जानी चाहिए केबी के reason माने अपन करा कौन? Dry reason. तमाम रखो तो संबलपुर, झारसुगुड़ा, बलांगीर. जो अपन माने देखी देवे संबलपुर ऊपर अच्छे, झारसुगुड़ा, बलांगीर एमती तल तल है कि अपन करा अच्छा. Okay. जो आप बेंगल अपन करा बहुत दूर रह जानी. So दूर दूर तक अपन करा कौन सी system connected नहीं to be run. Okay. Next question चलना तुम्हारे. Under which specific constitutional amendment was the name of the state officially changed from Odisha to Odisha and the language from Odia to Odia? आसो एबे टिके भलो क्वेश्चन अछि हिस्ट्री रो पळे आसलानी जियोग्राफी रो पळे आसलानी त मानकर पॉलिटी इकोनॉमिक्स ऊपर क्वेश्चन अछि भल लागो आसो कोर आंसर दिया आंसर ओडिया हेले हमें बुझी परिबुनी आ कोन करबा पिला माने ओडिया डिमांड कलेनी बा पडिबा तो अंडर व्हिच राइट आंसर कोन हबा अपन कर 92nd 4th 6th और 7th देखिबा कितना 96th वेरी गुड राइट आंसर अपन का 96th हे गला हैला सो 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अपन कर हेतिला कोन हेची ना ओडिसा अपन माने ओडिया ओडिसा हेची 2011 रे अपन कर एनेक्टेड हेतिला आन मन रखन तो एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ ओडिसा इफेक्टिव डेट केबे थिला 1st ऑफ अप्रैल 2011 चेंज फ्रॉम ओडिसा टू ओडिसा ओडिया टू ओडिया ओके पर्पस कोन थिला ना टू रिफ्लेक्ट द true identity and cultural heritage of the people of the
Odisha state. Clear? Next question. Mate ko according to the rules of business of the Odisha Legislative Assembly, who determines the admissibility of a call attention motion raised by a member? If a member raised attention motion, tahale who will be the person to be responsible for? Quick. Chandra bhai, answer diyo. Chandra, answer diyo. Jaldi. The chief minister, governor, speaker and leader of the opposition. कौन हमारा right answer? देखो ऑप्शन में स्पीकर अच्छी. देखो देखो समस्त देखो. Very good. So right answer कौन? Speaker. देखो कौन कहउचंदी ना according to the rules of the business of the Odisha Legislative Assembly, who determined this is the speaker will be the right answer, and under the rule of the business of the Odisha Legislative Assembly कौन कहउची ना the decision of the speaker as to whether a called attention motion is admissible or not shall be of final. Okay, so this is the all information, you just have a look here. Next mate कहि दियो, which article of the Constitution of India provides the structural framework for the creation of a joint state public service commission JSPSC if two or more states agree? जदि दीटा और दीटा रो स्टेट अधिक स्टेट जदि एग्री हेले ताहाले आपनकर जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन हेई पारिबो. ताहाले मते कोन दिस इज अंडर आर्टिकल व्हाट? जल्दी जल्दी जल्दी. आर्टिकल 315, 316, 320 और 323. कौन अब आर्टिकल 315? अरे वाह. देखो आर्टिकल 315 will be the right answer. A joint state कौन overview कर दिया ना, जे joint state public service commission can be constituted for two or more state by agreement, and it enables state to share the resources and expertise in conducting the recruitment. Suppose आपनकर एबे किछि गोटे allocate 315 according हमर state माने agree हेले ताले बिहार सहित बेंगल सहित मिसी की आमे माने गोटे JSPSC कमिटी करि परिबा rather than the OPSC जेंति BPSC WBPSC. तो एई बदल रे हमर गोटे JSPSC हेई परिबा अंडर रिक्रुटमेंट एक्सेट्रा आमे जाई कि वेस्ट बंगाल जॉब करि परियो, वेस्ट बंगाल वाला सी बिहार बिहार वाला सी ओडिसा रे व्हाटएवर माने पूरा मिसी जीवो आ कोन हैला. नेक्स्ट चलो मते को इन द एब्सेंस ऑफ बोथ द गवर्नर. Okay, so in the absence of the both of the governor and the chief justice of Odisha High Court, who is constitutionally authorized to discharge the functions of the governor of Odisha? The governor of Odisha कथा इटी आसिला को मत जल्दी आंसर दियो. जेके सस्मिता प्रशांत अजय जितेंद्र श्री जल्दी आंसर दियो. ऑप्शन सी देलानी सीनियर मोस्ट जज ऑफ द ओडिशा हाई कोर्ट अवेलेबल. अरे बा ग्रेट. सो राइट आंसर आपनकर हे गेला कोन? द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट केमिति आसीबो ना व्हेन द गवर्नर इज एब्सेंट or unable to act and the chief justice is also absent and unable to act, order of the performance kon rahibo na. First thing chief justice of the high court rahiba kata. Second रे आपनकर की हेबे the senior most judge of the high court will be available. Then judge of the high court next seniority तांको consider करा जिवो, else other person as the president may appoint करा जिवो तांको newly. Okay, माने president जहा को appoint करिवो तांको गेस को जिवो. तो explanation कोन रहउची देखो ना, constitutional ensure continuity in the functioning of the state of the absence of the governor. The total आपनकर not applicable केबे आपनकर applicable हेई परिबो नाही ना. The speaker of the legislative assembly आपनकर not mentioned in the article 223 रे आपनकर मेंशन हेची हेई परिबे नाही. The chief secretary of Odisha हेई परिबे नाही, not mentioned in article 223, and advocate general of the state भी हेई परिबे नाही. 223 रे सब इनसा मेंशन करा जाई छी हैला. चलो नेक्स्ट में देखो, how many urban local bodies in Odisha currently designated as functioning as municipal corporation? आसो जल्दी पुणी लिख लो पढ़ी फिनी को. How many urban local bodies in Odisha are currently designated and functioning as municipal corporation? कौन होगा right answer? Quick answer the answer. Answer the option B. Okay, very good. So 5 है right answer. See कौन 5 रहउची ना. टोटल आपनकर 5टा म्युनिसिपल लोक आपनकर कॉर्पोरेशन रहउची. गोटे होची भुवनेश्वर, कटक, देन केबे को ईयर रे देखो भुवनेश्वर फर्स्ट इतला 1984 रे, तापरे कटक 2003 रे, देन राउरकेला आपनकर 2003 रे, संबलपुर 2003 रे, बरहमपुर 2010 रे आपनकर हेई गला. एंड जदी लास्ट टेस्ट से पछारा गला ताहाले आपण माने कोन कहबे ना पूरी को एठी ऐड करी देबे. को ईयर रे पूरी को ईयर रे जल्दी. ओके देखो सो एटा जदी आपन को टोटल पचारि थांदा एटा ऑप्शन 6 रे थांदा. देखो 5 अछि त 5 मारिबो. जदी ऑप्शन 6 थाई कि 5 अछि ताहाले बिल्कुल 5 मारिबोनी, 6 को मारिबो. जदी ऑप्शन आपनकर कोन 6 नाही 5 अछि ताहाले आपन को 5 मारिया को पड़िबो हैला. से अनुसार आंसर देबे.
ठीक अछि नेक्स्ट चलो को ईयर हेतिला टिके गधस्थल आंसर दियो 25 रे वेरी गुड चलो नेक्स्ट मते को अच्छा again guys कहूची OPSC ASO the one and only solution to become a assistant section officer in the secretariat and you can be in the Bhubaneswar for your lifespan okay that means आपनकर ड्रीम जॉब हमें कहि परिबा ASO जोटा कि समस्त ड्रीम जॉब नो आपनकर याडू साडू किछि पोस्टिंग हेबार नाही गोटे जगह रे रहिबे जीवन जाक सो बेस्ट जॉब होउची आपनकर आफ्टर OPSC OCS तापर आपनकर ASO सो हैव ए लुक हियर अनुशासन बैच आसी जाइछि आपण माने जल्दी ऑफर को ग्राफ करिवे ओके थैंक यू कोन सॉरी होला क्लास अरे अछि क्लास सॉरी होला कोन थैंक यू कोथि पई ओ हेलो मिस्टर मिसेस रहि जाओ आई एम हियर हां वेट बुझी पालन एते स्पीड सत्य तुमका केमिति मु बुझेबी आसा मते को थ्रो व्हिच okay as through which landmark judgment did the Supreme Court of India rule that the at least 30 जाए तो चलो काई इनते उछन होउछ 30 जाए तो जीवा आसो मते को through which landmark judgment did the Supreme Court of India rule that the preamble is an integral part of the constitution and can be amended under the article 368 without altering the basic structure कौन हेतिला केबे हेतिला मते को केस रे आपनकर ये सॉल्व हेतिला क्विक आंसर नहीं ना रे बा केशवानंद भारती केस 1973 अरे बा ग्रेट ओके आसो तो राइट आंसर आपनकर कोन 1973 केशवानंद भारती केस तो केबे हेतिला 1973 रे इंपोर्टेंट मन रखंतु ए 13 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डाइवोर्स्ड दिस हिस्टोरिक जजमेंट बाय अ कोन ओडे हेगला अच्छा ये क्लिक हे जेछि की नहीं आओ देखो सो कोन हेछि ना 13th जज आपनकर बसथिले तो सेतिर आपनकर जते बेले सुनानी आसीतिला फाइनल हियरिंग आसीतिला 7:6 रे आपनकर आसीतिला माने 7 जन जज आपनकर हियरिंग थरे जाइतिले 6 जन जाई नथिले इट वाज अ केस ओके सो एवरीथिंग का डिटेल तक म आपनको मेंशन कर देछि जे कम टाइम अछि आपन मन टिके चेक कर देबे मते कोन द 73rd constitutional amendment act 1992 कथा पचारुछि added which new part of India which new part and which specific schedule to the Indian constitution to govern the panchayat raj institutions जल्दी आंसर देला हो आंसर टिके दियो तमर देह भलो हेछि बसी मानचन दियो पार्ट 8 पार्ट 9 पार्ट 9a पार्ट 10 कोन हबो पार्ट 8 हबो वेरी गुड आसो बढ़िया आंसर देइछो सो अरे 9 हेबा कथा ना हां 9th हबो आपनकर 9th of 11th schedule ओके सो कोन कहउछि देखंतु ना फास्टिंग 73rd constitutional amendment act 1992 रे हितला इज द लैंडमार्क स्टेप टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट एंड 19 रे कोन हितला आर्टिकल 243 टू 243 ओ पर्यंत आपनकर इंसर्ट करा जाय छै आर्टिकल 19 रे 11th schedule रे दैट ए न्यू 11th schedule was added containing 29th of subjects to be developed to the panchayat level तो मते देखंतु एठी कोन मेंशन करा जाय छि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस एंड पावर द पंचायत एज द इंस्टीट्यूशनल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड एक्सेट्रा पॉइंट्स ऑफ मेंशन करा जाय छि आपण माने टिके पीडीएफ पाइला परे आपको ओवरलुक करबे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन who among the following appoints the state election commission of Odisha who oversees the rural and urban local election जल्दी आंसर दियो urban rural local elections कथा कहू छि जल्दी आंसर दियो The answer दिया मते who among the following appoints the state election commission कथा कहूची माने आपण माने obviously answer कोन देबे ना गवर्नर ऑफ ओडिसा जेते बेले आपनकर इंडिया रो स्टेट इलेक्शन सॉरी इंडिया रे आपनकर कोन चीफ इलेक्शन कमिशन कथा कहूची आपनकर प्रेसिडेंट देबे जेते ओडिसा कथा कहूची जे कोनसी स्टेट कथा कहूची तो obviously गवर्नर ही हेबे सो एनसीओ कोन करिवे ना फ्री एंड फेयर इंपोर्टेंट इलेक्शंस आपनकर हबो एटा अंडर आर्टिकल केते रे मेंशन करा जाय छै अंडर आर्टिकल 243 के रे मेंशन करा जाय छै द कॉन्स्टिट्यूशन provides for the state election commission in the state article 243 ZA mention kara jaisi that applies the above powers a provision to the union territories also so everything has been mentioned in the pdf apna mane paila pare overlook karibe next question mate kontu what is the minimum quorum required to conduct a sitting of the Odisha legislative assembly which has a total strength of 147 members jaldi ko total apna manu kete कहतिली kete रहिबा दरकार डिवीजन सब रूल भी मेंशन कर देछि विश्वास करो बिल्कुल भी अपना माने व्यस्त होंतु नाही म आपन को प्रोवाइड करि छी राइट आंसर आपनकर 15 मेंबर्स हबा केमिति हबा देखंतु टोटल मेंबर आपनकर असेंबली रे 147 डिवाइडेड बाय आपनकर 10
1/10 हमको दरकार 1/10 रहले 14.7 होची ओटा को अप्रोक्सीमेटली 15 मेंबर्स निया जाईची ओडिशा स्टेट असेंबली रे सब जे कोनसी आपनकर स्टेट रे हबो टोटल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 10 कर दबो हैला चलो वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन चला मते कुआ व्हिच पार्लियामेंट्री कमिटी इज एंटायरली कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स chosen exclusively from the Lok Sabha with no representation from the Rajya Sabha कौन हमारा राइट आंसर जल्दी क्विक बी पक्का एस्टिमेट बी एस्टिमेट कमिटी हो देखो राइट आंसर कौन होची ना एस्टिमेट कमिटी ओके कौन कहची देखो ना फास्ट पब्लिक अकाउंट कमिटी जदी कहूची ये कोन करूची ना एग्जामिन करूची द एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड ऑडिट करूची रिपोर्ट मानकू कहार ना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बट जदी एस्टिमेट कमिटी कहूची ये एग्जामिन करिवो एंड एस्टिमेट करिवो काहाकू ना द रिसीप्ट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट जोटा की क्वेश्चन आपन को पचारि छि व्हिच पार्लियामेंट्री कमिटी entirely composed of members chosen exclusively from the Lok Sabha with no representation from the Rajya Sabha and आउ कोन करूची देखंतु एठी ना composed of entirely the members of Lok Sabha and आपनकर कोन nominated by the speaker of Lok Sabha ए जिंस को आपनकर कंप्राइज करे the committee on the public undertaken कहूची से एग्जामिन करबो काहाकू ना the report of controller and auditor general relating the public undertaking and जदि आपन को डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी कथा पचरुची से एग्जामिन करिवो फाइनेंस ऊपर तो ग्रांट एंड वेरियस मिनिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट्स ओके हां बुझी गले तो आज पई आपन मानकर सेशन एतिकी ही थाउ ना कोन कहउचो लाइक तो तमाने करलनी सब्सक्राइब भी तमाने करलनी मो तो माने पई काई एते हाई पई हे की एते राती रे क्लास नेबी को नेबी की बिल्कुल भी नहीं पुणी एक्स्ट्रा हरी 20 टा क्वेश्चन तमन को देबी एते कष्ट करके बनेची सी भी देबीनी डिलीट कर देबी जमा नहीं जानछ ना नहीं छोटो बेले केमिति हुए खेलला बेले तू जदी बैट मते दबु ताहाले मु तते बॉल देबी आ आमे खेलिबा जदी बैट दबुनु मु भी बॉल देबिनी खेल हबनी चुपचाप हेगी तू तो बॉल धरे मु मो बैट धरिबी बसिकी रह खेल पछे न हो किंतु तू देले मु देबी जानछ ना नहीं ठीक सेमिति द मान को आसो अगेन अनु आपनकर स्पंदन बैच गाइस 5099 एसपीजी 10 कोड आपन माने यूज करिवे एक कोटे 10% रे एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपन माने एठी पाई परिवे जदि आपन माने सहकारी बैच नोचंती 1199 अवेल करि परिवे जदि आपन माने ओपीएससी एसओ नेबा को चाहुचंती ताहाले अनुशासन बैच लॉन्च हे सारी छी 25 तारिख माने सोमवार आपनकर क्लास स्टार्ट होउची तो आपन माने जॉइन करंतु निहाती 2000 होउची आपनकर टोटल प्राइस and जो क्लास रो पीडीएफ पई जो स्टूडेंट्स माने ओरिएंट होउतिले ताहाले मने रखो दिस इज द क्लासेस रो वेदांग क्लासेस रो टेलीग्राम चैनल जो माने चैनल को सब्सक्राइब करना आउ थरे कहूची चैनल को सब्सक्राइब करिनियो एंड दिस इज द वेदांग क्लासेस रो टेलीग्राम चैनल जॉइन हिज अ पीडीएफ ओके आउ कोन कहूचो की हां नाइस सेशन एज ऑलवेज बस टिके मन दुख होला 50 टा क्वेश्चन बहुत कष्ट रे बनेइथिली तो हमनकर कंप्लीट करि पाबी रेस्ट ऑल ओके छाड़ा एनीवेज मैम रागी चंदी ना मु तुमको रागिला हला देखा जाउची मु रागिनी मु राग भाबे छाडी देलिनी काहे तमन को बे रागी बे केते दिन तमन कर क्लास नेबी जे रागी भी कोना छाड़ा थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच हैव ए गुड नाइट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ but give priorities to your parents. This would be your first priority, no one else in the world. Thank you so much. Have a good night, guys. Bye bye. Take care. Thank you. Jai Jagannath, guys. Take care. Bye. Love you all.